So hello everyone. So this is the second question of analog electronics, and here also we have to draw the transfer characteristic for the circuit, and both the diodes are ideal here, and these are the voltages. And the interesting part is the supply is varying now. This is the interesting part कि supply vary हो रही है यहाँ पर. So how to analyze the circuit? Again we have to uh, analyze the circuit from the initial condition of the circuit. Means again we will use the concept of 0 plus at time t is equals to 0 plus. जब circuit just start हुआ है at time t is equals to 0 plus, we can assume the value of input voltage at 0 plus to be 0.1 volt, or we can assume any small value. Just for instance I have assumed it as 0.1 volt. You can assume it is 0.2, 0.3, 0.5, any value, मतलब just a small value because the circuit जब start ही हुआ है. So input value is 0.1 volt. So for this value of input, both the diodes will be reverse biased because the higher positive voltages are connected at its end terminal, right? Negative terminal, both the diodes will be reverse biased. So that's why both the diodes will be reverse biased. So for this input supply, D1 and D2, both diodes will be off. So it will be open circuit, reverse bias, right? So the circuit will be like this. यहाँ पर ये 100 kilo ohm, this is the open circuit, and यहाँ पर ये 100 volt, and this will be again open circuit. This is 200 kilo ohm and this is 25 volt. So as we can see कि पूरे सर्किट में कोई करंट तो फ्लो हो नहीं रहा, तो इसका ड्रॉप 0 वोल्ट हो जाएगा. रेजिस्टर की वैल्यू लिखने का कोई मीनिंग है नहीं, राइट? सो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज एंड यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज एंड दिस विल बी सिंपली 25 वोल्ट. एंड इस टर्मिनल पे नाउ दिस टर्मिनल इज वी आउट व्हिच इज इक्वल्स टू 25 वोल्ट, एंड ये बेसिकली डायोड D2 है, दिस इज द डायोड D1, एंड हियर इट इज 100 volt and this is 100 kilo ohm. जिसको भी लिखने का कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज इसका ड्रॉप भी 0 वोल्ट है, एंड हियर इट इज द इनपुट वोल्टेज व्हिच वी हैव अज्यूम्ड इट एज 0.1 वोल्ट. सो बेसिकली इस टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट, राइट? सो फॉर दिस डायोड D2 टू बी ऑन, मतलब अगर ये ऑन करना है इस डायोड को, तो ऑब्वियसली इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 25 वोल्ट बिकॉज इस डायोड का जो P टर्मिनल है इट इज द इनपुट, एंड इस डायोड का जो N टर्मिनल है दिस इज द V आउट दैट इज 25 वोल्ट. सो फॉर D2 टू बी ऑन, VI इनपुट जो है शुड बी ग्रेटर देन 25 वोल्ट होना चाहिए. मतलब ये जो सर्किट ड्रॉ किया है, दिस सर्किट इज फॉर द रेंज 0 to 25 वोल्ट, right? Then only both the diode will be off. For this range is the circuit, and the diodes are off. We can cross check this one by using the open circuit voltage here. We can, whenever the diodes are off, the open circuit voltage across it is less than 0, that is negative. We can cross check it like यहाँ पर ऐसा केबल लगा सकते हैं, and we can find this VD1 voltage. When यहाँ पर केबल लगाएंगे तो this is the point minus 0.1, right? This minus 0.1, then plus इसका ड्रॉप तो 0 वोल्ट है, then this is the VD1 and plus 100 volt. So it will be 0. So VD1 is equals to minus of 99.9 volt, right? So our assumption is true because the diode voltage is negative, and so it is reverse bias. Similarly इसका भी we can यहाँ पर भी इसको वैलिडेट कर सकते हैं. यहाँ पर इस तरह से we can go with the KVL, यहाँ पर इस तरह से इस पूरे लूप में इस तरह से. So again it is minus of 0.1 volt, then यहाँ पर this is the VD2, then plus 25 volt equal to 0. So VD2 is equals to 0.1 minus of 25, that is minus 24.9 volt. So it is also negative. So both our assumptions are true, right? So now the second case, when input supply is greater than 25 volt. So when input is greater than 25 volt, what we can see here, when the input supply is greater than 25 volt, D2 will be on because its positive terminal will be greater than its negative terminal, right? So we can clearly see that D2 will be on for this value of input range, right? But we can't say about D1 right now. D1 के बारे में नहीं बोल सकते, तो D1 अभी ऑफ है. क्यों ऑफ है अभी पता चल जाएगा क्यों ऑफ है. So D1 is off, so the circuit is like this. यहाँ पर ये 100 किलो ओम है, D1 is off. This is 100 volt, and this is 100 volt, and this is D2 on. ये D2 on हो गया है, this is the on, and
यहाँ पर दिस इज द 200 किलो एंड यहाँ पर बेसिकली 25 वोल्ट है. दिस इज द दिस इज 25 राइट. नाउ व्हेन D2 इज ऑन, तो देखिए यहाँ पर जैसे D2 ऑन हुआ, तो when D2 is on, so इस टर्मिनल पर Vout है राइट, एंड सिमिलरली अब Vout यहाँ भी Vout हो जाएगा. So we can't say V1 to be off because now Vout is the positive terminal voltage of this D2, D1, sorry D1. ये VP, this is the VP and this is the VM and this is the D1 and यहाँ का जो reference ये voltage है this is 100 volt, right? So for D1 to be on, यहाँ पर for D1 to be on, Vout should be greater than 100 volt, right? Vout should be greater than 100 volt, but Vout is not equal to Vin here. So we can't say for this range that D1 to be on. So because Vout is not equals to Vin here, this is important. Vout Vin नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए Vin की इस रेंज के लिए सर्टेनिटी के साथ तो नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं कह सकते एक्चुअली कि D1 ऑन होगा या नहीं होगा. Now for D1 to be on, Vout should be greater than 100 volt. And for calculating the value of Vin, first of all we have to find the relation between Vout and Vin. Because of this resistor Vout is not equals to Vin, we have to find the first of all the relation between Vout and Vin, and for this we can easily apply KCL here, right? KCL at Vout terminal, this Vout terminal पर basically सिंपल सा यहाँ से KCL लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका relation we can calculate. So it will be Vout, this one इस branch के लिए Vout minus of 25 divided by 200, एंड यहाँ पर कोई करंट जा नहीं रहा है बिकॉज दिस इज ओपन सर्किट, सो दिस इज 0 एंड प्लस V out minus of Vin divided by 100, that is equals to 0. So when we take the LCM, so it will be V out minus of 25. Simply यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, this is 2 V out minus of 2 Vin, that is equals to 0. So it will be 3 V out, that is equals to 2 Vin plus of 25. So Vout is equals to 2 by 3 Vi and plus 25 by 3. So this is the relation actually between output voltage and input voltage. So for D1 to be on, Vout should be greater than 100 volt, right? So let's write again. For D1 to be on, Vout should be greater than 100 volt, and Vout in terms of Vin is 2 by 3 Vin plus of 25 by 3, that should be greater than 100 volts. So this is how we can find the actual range of input voltage for the D1 to be on. So it will be 2 by 3 Vin should be greater than 100 minus of 25 by 3, and it will be 300 minus 25, that is 275, right? This is 275 upon 3, and this is the 2 by 3 Vin. 3, so 3 cancel out, and this will be 2 3 and 7.5. So actually input should be greater than 137.5 volt for D1 to D1. So this is good point, because ये जो वैल्यू है ये कहीं भी सर्किट में नहीं दिखता हम लोग. So this one, so actually जो ये आपने सर्किट बनाया है, so that's why this circuit is true for D1, because so this circuit range is actually, the input range is actually 0 to 137.5. This is good because for this range D1 is off, right? So this circuit condition is for this input range. Now and for this input range, output voltage is this. It is following a straight line equation. We can easily compare it as y is equal to mx plus c. The slope is 2 by 3 and the intercept is 25 by 3, right? And now the third case, when we should actually name this. This is the case 2. Now this is the case 3. When input is greater than this value 137.5, then the diode D1 will be on, right? This one, and diode D2 तो on था ही,
equal to on 3. So both the diodes are on those, and the circuit will be 100 kilo ohm, and यहाँ पर ये circuit will be like this: 100 kilo ohm. This is the 100 kilo ohm, and now the D1 is on, and यहाँ पर 100 volt था basically, and this is also on, and यहाँ पर 200 kilo ohm, and this is 25 volt. This is 25 volt. This is 100 volt, and now we can clearly see that now for this range of input, the output is equals to this supply 100 volt, right? This is the 100 volt. So for this range, output is 100 volt, and here's the input. D1 is on. Similarly, D2 be on. So this is how we can proceed in this question, right? So अब यहाँ पर जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो कैसा बनेगा? Let's see the transfer characteristic. Yes, so see this the transfer characteristic. Initially the यहाँ पर जब supply is less than 25 volt, right? The supply is less than 25 volts, so output voltage was simply 25 volt. So यहाँ तक 25 volt से पहले तक तो it will be simply 25 volt like this. यहाँ तक. Now after this 25 volt to this value, that is 137.5 volt, यहाँ तक it is following a straight line equation. इस तरह से कुछ ये ऐसी straight line equation को follow कर रहा है, and in fact its slope is 2/3. So यहाँ से देख सकते हैं कि this is the slope. ये basically 2/3 का slope, and the equation is 2/3 behind plus of 25/3, and again after 137.5 volt, again it will saturate to the value that is 100 volt, right, which we have calculated. So यहाँ पर ये supply हो जाएगा. This is the this value is 100 volt, and this is the 25 volt. So this is the transfer characteristic actually V out and between, yeah, and input is up to 150 volt only. So at 150 volt also we will get the 100 volt, and यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट भी देख सकते हैं कि जैसे ये दिस इज द इंटरसेप्ट 25/3, तो यहाँ पर ये कहीं पीछे पे कट करेगा इंटरसेप्ट, दैट इज ये 25/3 है, सो इट विल बी समथिंग नहीं 8.33, राइट? दिस इज द 8.33 इंटरसेप्ट. सो इस तरह से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D1 एंड D2 बोथ आर ऑन. दिस इन दिस रेंज, इस रेंज में वी शुड चेंज द कलर. सो इन दिस रेंज में यहाँ पर आपका जो D इस सप्लाई में D1 तो ऑफ था, दिस इज ऑफ, एंड D1 इसमें जो D2 है दिस इज ऑन, D2 इज ऑन इसमें, एंड यहाँ पर तो both diodes were off, तो D1 भी ऑफ and D2 भी off. So this is the transfer characteristic. And one more thing, यहाँ पर we can the question can be asked like this also कि for any input value between this two range, that is let's suppose we have to calculate the value of output voltage for the input value of 100 volt. Actually I should add it here. So the value of V out for input is equals to 100 volt is. So this is a good question, right? Now this can be a good question because यहाँ पर जब 100 volt होगा, so we have to use this straight line equation, और इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर सॉरी जहाँ से ये 100 volt इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, we have to use this as, so we can use it here. So V out for input is equals to 100 volt. 100 for 100 volt is equals to, simply we have to
put it here 2 by 3 into 100 and plus 25 by 3, so it will be 2 by 3, that is ये 33.33 into 2, that is 66.67, and ये हो जाएगा 8.33, so it will be like it will be 66.67 plus 8.33, that is 75. Wow, absolute value we have got the 75. So this can be also the style of question, and it will be a very good question अगर इस तरह की बातें हो क्वेश्चन में तो. This is the 75 volt. This one is the good point. So we can, so एक बार रिवाइज कर सकते हैं. So whenever ऐसे डायोड सर्किट्स में कुछ भी समझना है तो just we have to apply this concept of zero loss. This is a good concept actually, because we have to analyze the circuit with its initial condition only, right? Because इनिशियली जब सर्किट स्टार्ट हुआ है तब अपन को पता होना चाहिए कि क्या क्या बातें हो रही है. जब सर्किट स्टार्ट हुआ है तब both the diodes are off and we can see and we can validate this also. अगर आपको assumption में कुछ भी confusion है तो इस तरह से validate कर सकते हैं. Now and according to this we have to एनालाइज इट कि किस किस वैल्यू के लिए क्या क्या बातें हो सकती है. मतलब यहाँ पर 25 वोल्ट से ग्रेटर देन है, बट नाउ जैसा कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस तरह से देख पाना सर्किट को, इस तरह से रिलेशन निकालना. बिकॉज यहाँ पर इस तरह से एक एक रेंज के लिए वी हैव टू एनालाइज इट लाइक दिस कि जब 25 वोल्ट से ग्रेटर देन है तब क्या चीजें हैं. फिर यहाँ पर जब फिर आपको अगेन सर्किट को ड्रॉ करना पड़ता है. फिर यहाँ पर वी आउट आ जाएगा तो वी आउट शुड भी ग्रेटर देन वी आउट इसका वीपी टर्म. बिकॉज बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि कोई भी डायोड को ऑन होने के लिए वीपी शुड बी ग्रेटर देन वी एन. सो इन चीजों को अपन को केयर करते आना चाहिए. दिस वन एंड वन मोर पॉइंट इज दैट कि डायोड सर्किट में कितने भी डायोड हो मैटर नहीं करता है. फॉर द होल रेंज ऑफ इनपुट देयर मस्ट बी चेंज इन द स्टेट ऑफ एवरी डायोड जस्ट फॉर वंस. मतलब कोई भी डायोड अगर सिर्फ एक बार ही स्टेट चेंज करेगा, या तो ऑफ से ऑन होगा, मतलब ऑफ से ऑन या फिर ऑन से ऑफ, ये यही बेसिकली दो स्टेट्स होती है. जैसे यहाँ पर दोनों डायोड्स ऑफ थे तो बेसिकली इनको ऑन होना था. मतलब जैसे यहाँ D2 ऑन हो गया है तो ये ऑफ से ऑन हो चुका है, तो एक बार इसने स्टेट चेंज कर ली. अब इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव फोकस्ड ऑन D1 ओनली, बिकॉज D1 को भी ऑन करना था. so, ये भी एक गुड पॉइंट है फॉर द थर्ड प्रोसेस. सो ठीक है, ओके, थैंक यू.